नमस्कार। बीनो पेशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। आज के इस अंक में हम आप तक पहुंचाएंगे एक रिपोर्ट मोहन जी के साथ हिंदू टेम्पल में हुए कार्यक्रम से, जो आधारित था प्रश्नोत्तरी को लेकर। आप मिलेंगे ऐसे कवियों से जो हास्य की नदी में आपको लेकर पहुंच जाएंगे, और इसके साथ ही साथ आप मिलेंगे एक लेखक से 40 वर्षों तक चिकित्सा के क्षेत्र में इंटरनल मेडिसिन के द्वारा सेवा करने के बाद अपने अनुभव को एक पुस्तक फाइंडिंग द ह्यूमन एलिमेंट के माध्यम से व्यक्त करने वाले डॉक्टर शरद जेटली। और ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत करते हुए हम आपको लिए चल रहे हैं हिंदू टेम्पल के उस सभागार में जिसे पार्वती हॉल के नाम से जाना जाता है। और मोहन जी का नाम कई देशों में फिलेंथ्रोपिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन के रूप में न केवल पहुंच गया है, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को और संतुलित और शांत बनाने की दिशा में कई युवा सक्रिय हो गए हैं, जो बहुत सारे सेवा प्रकल्पों के साथ भी जुड़े हैं। मोहन जी फाउंडेशन के अलावा कई ऐसे संगठन हैं जिसमें महिलाएं, बच्चे सृजनशीलता की अभिव्यक्ति के लिए एक विशिष्ट मंच पा रहे हैं। मोहन जी एक लेखक के रूप में भी अपनी ख्याति बना रहे हैं। उनके साथ न्यूयॉर्क में हुए इस पहले कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी के स्वरूप में मुझे ये प्रश्न पूछने का अवसर मिला कि द कश्मीरी फाइल्स देखने के बाद नॉन वायलेंट बने रहने की दिशा में कैसे बना रहा जा सकता है। और मोहन जी ने इसका उत्तर देने के साथ साथ अमेरिका में मोहन जी की फाउंडेशन द्वारा जो 2 विशिष्ट पुरस्कार दिए, उनमें एक नाम आपका परिचित है। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट इस कार्यक्रम पर। नमामि तं विनायकं, नमामि तं विनायकं, नमामि तं विनायकं, नमामि तं विनायकं। न ते तराति भीकरं, न बोधितार्क भास्वरं, न मत्सुरारि निर्जरं, न ताधिका पदोद्धरं। सुरेश्वरं निधीश्वरं, गजेश्वरं गणेश्वरं, महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं। नमामि तं विनायकं, नमामि तं विनायकं, नमामि तं विनायकं, नमामि तं विनायकम्। Expressions and based on what you see in the film as well as some other news, you feel that they are not just saying for the sake of saying. There is a potential lurking seeping threat which may explode anywhere. So now would you recommend being non-violent even in that case and having no reaction, or how should you I'm just concluding by saying, after you walked out of the theater having seen the Kashmir Files, what was going on in your mind, and my genuine concern about how to respond. Thank you. Coming to your question, when we believe in something which is positive and which is benevolent in the world, and we are sure this will not bring forth wars, bloodshed, displacements, agony, or any kind of things which are of negative by nature, it's our responsibility to stand up for it. We must. And also, we should never be afraid. I don't believe in fighting, but I believe in talking the right thing at the right place. And
world listens to authentic things, definitely. Sorry. So, there are 8 billion people out there, 8 billion people and growing. People are growing. So many people out there, and the earth cannot handle so many people. And all these people are oriented to some kind of system, some practices, some belief systems, etc. This is all fine, but the human law, the social law, should be in such a way that nobody is higher or nobody is lower. Equality must happen. So a system like United Nations or there should be a monitoring body which ensures that everybody is safe on earth. Sarve bhavantu sukhina. All that kind of whatever Vedas have said, brilliant stuff. Loka samastha sukhino bhavantu. We always said everybody be happy and peaceful. Not only people. When we kill a lot of animals, when we torture animals in the laboratories, etc., the vibration that's going out into this world is of war. Same thing. Torture, suffering, victimization, victimhood, all these things bring forth that effect in the world. So we have to fundamentally make some shifts. So many things are legal, but they are not ethical. My morality is very simple, ahimsa. Non-violence is my morality. But at the same time, being practical is very important. You got to be very practical. Ahimsa does not mean you are a doormat. It's the responsibility of us to maintain this thing in the world. We cannot say, oh, I have nothing to do with it. I am a spiritual person. I will stay away from it. Not like that. Everybody are responsible. If you are holding the passport of a country, you should be responsible for that country, the well-being of the people of the country, harmonious existence of the country, where every types of people have an expression. See, two aspects of human existence. One is experience, other is expression. So expression is suffocated. Naturally, the society is contaminated. There will be bad frequencies in the world. So no level of torture should be accepted, whether it is politics, whether it is religion, whether it is anything. Everybody are free to follow the religion, provided it doesn't harm anybody else. No bird, no animal, no people are harmed because I follow something. And I don't believe that I can kill somebody because I don't believe in that person's belief. Not true. We can't do that. That's all barbaric. We cannot even accept that. Anything which is amounting to bloodshed is barbaric. We can never accept it. Displacement is unnatural. Like I like to live in my house. Why should I go to another person's house in another country or another situation? Displacement. Wars are forcing it to happen. It's unnatural. So many things are maybe accepted legally, but they are completely unethical. We have to call a spade at the right time, at the right place. This is important. And of course, journalistic people like you have a big role in it. When the voice of the silent are heard, it sometimes shakes people. So one of the key tenets of Mohanji's teaching is to add value to the world. He always says we must give back to Mother Earth more than we take from her. He encourages us to contribute and to serve the communities to bring about harmony and peace amongst all beings. To recognize and honor people who have made significant contribution to the communities through their visionary leadership, Mohanji Foundation will present the Award of Appreciation to 2 outstanding citizens. One of them is here today, one of them could not be here. We are grateful that Mohanji is here to present the awards. The first one is Dr. Gangadhar Rao Chalasani. Some of you might know him already. He's the founder of the Om Sai Mandir, which is just around the corner. Professionally, Dr. Rao has worked as a medical doctor. He specialized as a radiologist in nuclear medicine and has worked at some of the world's most prestigious hospitals. Since the 90s, he's dedicated his time in the service of Sai Baba and has carrying on his mission since then. In 2003, Dr. Chalasani and his wife founded the Om Sai Mandir, the world's first temple dedicated to both Shirdi Sai Baba and Satya Sai Baba. Om Sai Mandir is run entirely by Dr. Rao and his team of volunteers. The temple is open 7 days a week, 365 days a year, and follows the teachings and prayer schedules of both Shirdi Sai Baba and Satya Sai Baba. His humility and selfless service have inspired many, and we are deeply grateful
for his contribution. So we do have a certificate of an award that we will present to him. He was not able to come today, but we will present to him in absentia. The second one is Mr. Ashok Vyas. He's a program director at ITV. He joined in 1998. He began his career in the All India Radio in Jodhpur way back in 1982. He's produced, participated, wrote thousands of programs, including plays, features, talk shows, shows for kids, shows for women, Gandhi Charcha based on Mahatma Gandhi's literature, Vivek Vani based on Swami Vivekananda literature, wrote and presented every day for a year stories for kids in a show called Lo Bachon Ki Suno Kahani. With Shogun Television, Mumbai, he was also a freelance writer and translator in Mumbai. He's translated episodes of Batman and several other American shows for UTV. I did not know this. His interview based, he's got two signature programs. One is called The Wide Angle with Ashok Vyas, is shown twice a week, and the other one is called the Inside Tonight with Ashok Vyas, is also aired on prime time in ITV. He's produced several devotional shows on Shirdi Sai. He's a founder of YouTube channel, Hiramba Studio, produced over 351 episodes of Bhagavad Gita, and several interviews focused on mental well-being and spiritual awareness. Media campaigns for several print and other social media. He's also a Bharat Gaurav awardee. So in summary, he's an interviewer, he's a writer, he's a poet, he's a video cameraman. As you can see, he's been in action since the beginning of the program. He's the editor. He's also a Hindu priest and an excellent speaker. So thank you very, very much, Ashok Vyas ji. आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। हास्य कविता के साथ जुड़कर जो सहज गुदगुदी होती है और हंसी की तरफ पहुंचने का अवसर हमें मिलता है, वो हमारे लिए जुटाया एक शेर अर्ज किया है समूह के उन कवि मित्रों ने जो भारत से भी हमारे साथ जुड़े। तो देखते हैं कुछ झलकियां इन रचनाओं की जो हमें गुदगुदाने के लिए आतुर हैं। मतलब कि ऐसे होली में उल्लू बनाए गए, ओए होए होए ओए होए ऐसे होली में उल्लू बनाए गए, भांग के हमको लड्डू खिलाए गए। ओए होए होए क्या बात है। ऐसे होली में उल्लू बनाए गए, भांग के हमको लड्डू खिलाए गए। और शेर देखें, तब से है एक गधे सी मेरी जिंदगी, तब से है एक गधे सी मेरी जिंदगी, जब से शादी में घोड़ी चढ़ाए गए। क्या बात है। तब से है एक गधे सी मेरी जिंदगी, जब से शादी में घोड़ी चढ़ाए गए। और शेर लिखे कि एक दरोगा की छोरी से ईलू कहा, ओए होए होए एक दरोगा की छोरी से ईलू कहा, कल ही थाने में फिर हम मंगाए गए। कल ही थाने में फिर हम मंगाए गए। एक दरोगा की छोरी से ईलू कहा, कल ही थाने में फिर हम मंगाए गए। और शेर देखें कि देखकर उनको बेहोश जब हो गए, देखकर उनको बेहोश जब हो गया, 150 हमको जूते सुंघाए गए। 150 हमको जूते सुंघाए गए। और एक शादी का लड्डू ही खाया था बस, एक शादी का लड्डू ही खाया था बस, उम्र भर हमसे बर्तन भुलाए गए। उम्र भर हमसे बर्तन। अभी मुझे क्या दर्द है। वाह 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 वाह, मुझे आ गया। अनमोल जी बहुत धन्यवाद। आपने कहा था कि मैं कभी ये शायरी में सब बता दूंगा, बता ही दिया आप। जी जी तो हाँ। अब वो जो है पहली बात, वो पहले एक शेर सुन लीजिए कि भिड़ गए सूमों से उनके कहे, भिड़ गए सूमों से उनके कहे, होश में 3 दिन बाद लाए गए।
होश में वाह, 3 दिन बाद लाए गए। एक और आपने एक और सवाल किया था कि पहली बार देखा तो क्या हुआ, जो घटना हुई आप देखे हैं। एक शेर सुनिए कि एक टुनटुन सी बीवी थमा दी गई, क्या बात एक है। टुनटुन सी बीवी थमा दी गई, हम तो साली दिखा बरगलाए गए। ओए होए होए हम होए। तो साली दिखा, एक टुनटुन सी बीवी थमा दी गई, हम तो जवाब नहीं, साली जवाब दिखा नहीं। बरगलाए गए। और गिरे का शेर देखिएगा कि गिरे का शेर देखें, वो एक तिनका पड़ा आंख क्या दब गई, ओए होए होए। एक तिनका पड़ा आंख क्या दब गई, सर पे इल्जाम सारे लगाए गए। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। एक तिनका पड़ा आंख क्या दब गई, सर पे इल्जाम सारे लगाए गए। वाह, वाह, और मक्ता पढ़ता हूँ कि 250 ग्राम होली में अंदर गई, 250 ग्राम होली में अंदर गई, फिर तो अनमोल भी सुख भिड़ाए गए, फिर तो अनमोल भी सुख भिड़ाए गए। ऐसे होली में उल्लू बनाए गए। फिर तो अनमोल भी, क्या शब्द था? क्या बात है। फिर तो अनमोल भी, तुक भिड़ा फिर तो भिड़ाए अनमोल भी सुख भिड़ाए गए। ओए होए होए, वेरी गुड वेरी गुड। और मतलब पेश कर रहा हूँ कि सबसे ऊंची, आपने भी बिठा दिया, सबसे ऊंची जगह पर बिठाए गए। क्या बात आपने है, भी क्या मेरा बात है। विजन ऊंचा कर दिया है कि सबसे ऊंची जगह पर बिठाए गए, हम लोग बनाए गए। ओए सबसे होए ऊंची होए। जगह पर बिठाए गए, हम भी होली का भाड़ू बनाए गए। और पहले रंगों गुलालों की बारिश हुई, वाह, पहले रंगों गुलालों की बारिश हुई, बाद में सर पे झाड़ू फिराए गए, बाद में सर पे झाड़ू फिराए गए। और पहले ये गालों की आपका आपका ये जो शेर है, ये कहीं जी। ना कहीं राजनीतिक रंग लिए हुए है, क्योंकि झाड़ू से कोई आप याद आ जाते। आप याद आ जाते। ये पहले आपका इंटेंशनल नहीं रंगों है। गुलालों की बारिश हुई, पहले रंगों गुलालों की गालों बारिश की बारिश हुई, हुई। बाद में सर पे झाड़ू फिराए गए। और क्या अगला बात, शेर ये कि पहले गालों की रंगत दिखाई गई, वाह, पहले गालों की रंगत दिखाई गई, फिर दुपट्टे के पर्दे गिराए गए, फिर वाह। दुपट्टे के पर्दे हाय, गिराए क्या गए। बात। क्या और बात। ये अजब ही रवायत है त्योहार की, ये वाह। अजब ही रवायत है त्योहार की, पहले कूटे गए फिर मनाए गए, ओए होए पहले होए। कूटे गए फिर मनाए गए। ये अजब ही, बहुत ही अच्छा ये शेर अजब है, ही, क्या बात है, क्या बात है। ये क्या अजब कहने। ही रवायत है त्योहार की, पहले कूटे गए फिर मनाए गए। और होली को तो बहाना बनाया गया, हाँ, होली को तो बहाना बनाया गया, तीर कस कस के दिल पर चलाए गए, ओए होए होए तीर होए कस होए, कस क्या कर बात दिल है, पर क्या क्या बात बात चलाए है। गए। और जम के ठंडाई घोटी गई हुस्न की, ओए होए ओए होए, जम वाह के वाह। जम के ठंडाई घोटी गई हुस्न की, इश्क के खूब लड्डू खिलाए गए, हाय हाय, इश्क क्या के बात है, खूब क्या बात है। लड्डू क्या बात। खिलाए गए। और इश्क दिल के के लड्डू मारों, बताइए आप, क्या बात है। जी जी जी, कहाँ पे मिलते हैं दिल सर के ये? मारों की, दिल के मारों की नेमत है होली का दिन, वाह, दिल के मारों की नेमत का दिन, दिल के मारों को नेमत है होली का दिन, दिल के मारों को नेमत है होली का दिन, वादे पूरे बरस के निभाए गए, वादे पूरे बरस ओए के हाय, क्या बात है। निभाए गए। और छेड़ क्या छाड़ क्या, क्या नजर की बदी, वाह, छेड़ क्या छाड़ क्या, क्या नजर की बदी, सर पे इल्जाम सारे लगाए गए, सर पे इल्जाम सारे लगाए गए, सबसे ऊंची जगह पर बिठाए गए, हम भी होली का भाड़ू बनाए गए, वाह हम वाह भी वाह, होली का भाड़ू बनाए गए। बहुत ही अच्छा। वाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत वाह। डॉक्टर शरद जेटली ने 40 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की है एक चिकित्सक के रूप में। अपने अनुभव, अपनी जीवन यात्रा, अपने जीवन के उतार चढ़ाव को निर्भीकता से, साहस के साथ, चिंतन से उन्होंने एक पुस्तक के रूप में पाठकों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और उनकी ये पुस्तक बड़े प्रेम से सराही जा रही है। इस पुस्तक का नाम है
फाइंडिंग द ह्यूमन एलिमेंट। प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत का ये अंश। Human element is something which I think I was thinking about writing on a book, about almost 2 years ago. And since then, I have been sort of engulfed with as to how I can encompass this vital element that we were all born with, and we just need to re-explore from within and try and disseminate further outside. Not that it's something which is totally, out of the blue. It's there within us. It's just that over a period of time, I've seen to myself that I think, especially in the wake of the past 2 years since we've been engulfed in this epidemic, I think the human element, because we have become so remotely connected, because we are so far and detached from each other, I assumed that, in all walks of life, not necessarily in medicine, but even in other professions, may it be publishing, may it be media, may it be accounting, or may it be law, doesn't really matter. I think the more we are connected together in person, one, the clinical outcomes in medicine, of course, will be extremely better. Two, even in other fields, you will see that I personally feel that I think the productivity is much enhanced if the employers and the employees, they're all connected, more humanely. So the point was that 2 years ago, I began writing something, and I wasn't sure what I was really putting all of that together. But here comes out a book, which was only published last October in 2021. And now it's displayed at the Library of Congress. And I'm happy to share that now it's almost hitting the Amazon on certain medical categories in certain weeks as a bestseller. So I'm happy to share that with you that, look, human element is now being recognized. Because actually some of the ideas, they emerged while I was writing. And I did not even have the clue whether or not this would be the title. The title came in much later after I put all of my thoughts together. But you're right, how do you define human element? And that's one of the things that I personally feel the human element, like I said, we were born with. It has to have that compassion, the sympathy, the empathy within. And personally, it's the feeling of giving. Personally, it's the giving of laying out for the people. Personally, it's the feeling of actually reaching out to other people. Personally, it's making like a human connection, a human bond, a human bridge, if you will. And I think that's what implies human element. It may be from within the family members. It may be from within the closest friends. It could be, like I said, within the company, within your firm, within your studios here. Nothing like the moment I walked in a few minutes ago, I was greeted by a wonderful person and stuff like that. And it was just a human element was flowing, and it was just I had to say, it looks like I'm in India. It seems like the hospitality is such great here, and and that really touched the core of my heart. So if that feeling arises within the person, that's the human element. In doctor-patient relationship, I believe that is sacredly important. और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस द कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम फिर एक बार आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पेज पर ITV गोल्ड के मित्र बने, सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को और लिखें events@itvgold.com पर। अपना ख्याल रखें। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।